Today is revision test 1. Yes, right? ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, bachche. So are you prepared with the test? All of you? Are you prepared? Fully prepared? Sure. So test will be at 4 p.m. Okay, I will send the test document in the group at 4. So be ready with your test. Ma'am. Properly pen down the name, class, section, roll numbers. मैम टेस्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में ही है ना? Yes, yes. Test will be subjective and it will be shared at 4 p.m. So be ready for that. Now the next week the test is of Excel. है ना? Next week test किसके आपका? That is of Excel. Excel. Already we have revised the revision test 1 syllabus. हमने revision test 1 Yes, ma'am. we have fully revised that. So that's why I am going to start with the topics of revision test 2 today. Okay? क्योंकि Okay, revision ma'am. topics we have already done in the last week. So on next Monday again you are having the revision test 2. So it won't be possible to cover all the chapters in one lecture. So including the Monday's lecture, so that's why we are going to start today. All right. So I'm going to start Yes, with ma'am. the MS Excuse Excel. me, ma'am. Yes, yes. Yes, ये मैम जो एक क्लियर स्क्रीन वाला क्विक बेसिक में आपने एक सिंटेक्स थे सिंटेक्सिज्म मैम क्लियर स्क्रीन का कौन सा सिंटेक्स है आप एक बार वो बता दो CLS. ओके मैम क्योंकि आप directly Ma'am, I have a doubt. you have to simply write a CLS. All right. Ma'am, I have a doubt. हाँ जी. मैम जो बेसिक में जो हमारा जो है मैम हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रू लाइक थ्रू कमांड्स और थ्रू विद हेल्प ऑफ यूजिंग सिंटैक्सेस ड्रॉ ट्रायंगल और ड्रॉ अ सर्कल. Anything can be there. You have to be fully prepared with all the commands. Okay, ma'am. Right? Okay. Yes, ma'am. So open page number 16. Come to page number 16. Be quick. Yes, ma'am. You can mark the questions on the book or you can note it down the questions side by side, whatever the questions we are going to discuss. Okay. So the first one, just give me the answers side by side. Define formula. Ma'am, a formula is a mathematical expression or equation that includes operands and operators to evaluate the result. To So evaluate formula is a the mathematical result. expression that is used to some particular expression, and formulas always start with Equal to Equal to sign. sign. formula always starts with equal to sign. Clear? Any doubt? The definition of formula No, ma'am. is clear? Yes, Define ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, any variables on which operations are performed are called operands. any variables or numbers on which the operations are performed, that is called operands. Okay? That is called Yes, ma'am. operands. Two buttons on the formula bar. Enter button and Enter cancel button, button. cancel button. Two buttons on the formula bar are enter button, Enter button. cancel button. Cancel button. Cancel button. Right? Enter button का symbol क्या होता है? That is tick, and cancel Tick. button is Tick mark. cross. Cross. X mark. Cross. What are the parts of formula? Ma'am, mathematical operators Ma'am, equal to symbol and operands. Name the parts of formula. Firstly, ma'am, mathematical operators, operands and equal to symbol. operators, operands. Three parts make the formula. For example, equal to A plus B minus C. A1. Here equal to is equal to sign, and A, B and C are called, what do they are called? Ma'am, operands. Ma'am, operands. These are called operands.
and plus and minus are called Mathematical operators. operators. Right? So the parts of formula are clear to everyone. 3 parts of formula Yes, are ma'am. equal to sign, operands and operators. Any doubt? No, ma'am. All the questions are clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So let's do the next. एक्सक्यूज मी मैम मैम क्लास के मैम 5-10 मिनट्स में मैम आप क्यूबेसिक की जो शेप्स बनाने वाली जो कोऑर्डिनेट्स की मैम एक टाइम प्रैक्टिस करवा सकते हो? Please pardon what you are saying. यस मैम मैम एंड के 5 और 10 मिनट्स के अंदर मैम आप जो क्यूबेसिक के अंदर जो हमने थ्रू वेरियस कोऑर्डिनेट्स हमने यूज करके कुछ शेप्स या ट्रायंगल या सर्कल्स मैम ये आपको प्रैक्टिस करवा सकते हो एंड में हमने कि already कैसे कर कैसे लिया Gorish last lectures में. We have already covered. यस मैम मैम यस मैम 2-3 वीक से मैम मेरा नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है मैम कभी कनेक्टिंग बार बार होती है मैम एक्चुअली मैम मेरा नेटवर्क मोबाइल पे भी नहीं चल रहा प्रॉब्लम मैम मोबाइल पे भी आ रही है तो मैम मैं बच्चे अच्छी तरह से YouTube कर भी नहीं videos पा are रहा. there ना? YouTube videos are there. यस मैम So you might have gone through that. आपने देखी नहीं है, lectures नहीं देखे आपने? यस मैम मैंने लाइक बताया मैम मेरे मोबाइल पे भी प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की तो मैम वो बार बार ओपन होती है मैम दोबारा क्लोज हो जाता है. बच्चे वो तो लाइव क्लास में प्रॉब्लम होती है ना, YouTube पे वीडियोस पे थोड़ा होती है. YouTube की वीडियोस तो आ ही रही हैं. अगर मैं उस पे अब दोबारा नो मैम टाइम डाउन लगाऊंगी, इफ आई विल गो थ्रू दैट, तो उससे क्या होगा? एक्सेल की रिवीजन नहीं होगी बच्चे. फिर 3 चैप्टर्स आर देयर फॉर एक्सेल. फर्स्टली मुझे वो कंप्लीट करने दो एंड इफ द टाइम विल बी देयर वी विल डू दैट आल्सो. ओके, ओके मैम we will do that, but let me finish the excel क्योंकि in between ऐसे टॉपिक स्विच करना बाकी बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है. राइट? ओके मैम यस मैम. Okay, so next is, now these questions are clear. Timings of the test बच्चे 4 PM. Divang, I already conveyed the timings of the test 4 PM. Right? So be ready for that. Okay, next I'm going to raise it. Done? Should I raise everyone? Yes, ma'am. यस मैम. Name the concatenation operator. Name मैम the प्लीज रिपीट द concatenation- क्वेश्चन. Name the concatenation operator. मैम एंड The concatenation operator is and what do we And. call this? एंड This is used to No. join the 2 strings. For example, in Excel, when you want to join 2 strings, computer, 2 words will be joined by and symbol. Okay. And what it will give you? It will give you the result. Computer Like this. world. कंप्यूटर वर्ल्ड. Okay. So you have Yes, to ma'am. specify using the and operator. We can join the strings again. Any doubt? No, ma'am. Next are what are cell references? Ma'am, the Ma'am, cell cell addresses in a references in a formula are formula known as cell references. known as cell references. Cell references are the cell addresses. What अरे are क्या कर cell रही हो बहुत अच्छी references? बोलती है. The cell references are the cell. Yes, बच्चे. Cell references are the cell addresses in a formula. The cell addresses in the formula is called cell addresses. All right. Name the 3 types of cell references along with the example. Name the
Name the types of cell references along with example. So 3 types of references are, कौन कौन सी 3 references होती हैं? Relative, cell reference, absolute cell reference, mixed cell reference. Relative cell reference means in which the cell addresses will change. Okay, relative में cell reference will change. Absolute में no cell addresses will be changed. Mixed cell reference, partially the content will be changed. Partially the content will be changed. Absolute में no content change. Relative में content will get changed. Now the example, how you are going to come to know that whether the content will change or not. When there will be $2 signs, that is absolute. When there will be $1 sign, that will be mixed. आपने पहचान कैसे करनी है? Absolute में $2 signs, mixed में $1 sign, relative में no dollar sign. Okay, so you can give any example according to your own. For example, relative में कोई भी बना दो. K8. Any cell address. Now you know that how to form a cell address. Cell address will be formed by the combination of row and column. This is column, this is row. जो K है ये आपका column है, 8 क्या है? Row. And where the row and column intersect, that forms the one cell address. Okay. Absolute में $2 sign will be there. Relative में no dollar sign. Absolute में $2 signs, mixed में only $1 sign. For example, जा तो M के आगे डॉलर आ रहा है, जा तो आप रो के आगे डॉलर लगा दें. ठीक है, चाहे रो के आगे डॉलर, चाहे कॉलम के आगे डॉलर. Any doubt till now? Yes, any doubt to anyone? Clear है? Done? Should I raise? Name the inbuilt functions. Name the inbuilt functions in Excel. Examples can be any. You can write any example. Need not to copy it from me. The examples can be any. The inbuilt functions are now how you have to write a function. Nobody will write it like this. Sum. I am straightly going to mark it 0. This is wrong. This is not the syntax of writing a function. And I will not give marks if you will write this thing. The inbuilt function, when you have to write it with proper syntax. The function will always start with equal to sign. Equal to sum. Equal to max. Min. Product. Average, count, right? So these are the inbuilt functions. You have to write a proper function name. Today, round, all right. Yes, Karthik. यस मैम. मैम जैसे आपने बोला कि ये फंक्शंस में हमने इक्वल टू साइन लगा के प्रॉपर सिंटेक्स में लिखना है,
मैम बुक में तो बिना इक्वल टू साइन के, मतलब वो गलत है, अभी उसको हम आपको करेक्ट जब कर लेंगे। लेक्चर हर बार ही मैंने टेस्ट में ये रॉन्ग किया है। दिस वाज द चैप्टर इन ओके मैम। 21, एग्जाम में भी ये नंबर काटते थे, ओके मैम। right? So the inbuilt functions are clear. Now what is the use of sum function? मैम इट कैलकुलेट्स द सम। Sum function is used to calculate the sum of values in a given range. जो भी आपको रेंज में दिए हुए हैं, you need to perform the addition of that. So sum will calculate the addition of numbers in the given range. What is the use of max function? It returns the maximum value. Yes, it will return the maximum value, that is the highest value. Min, It returns the minimum value, that it is lowest returns the value. minimum value from the given range. Average, It finds the average of range. average of the numbers in the given range. You are not listening. What's your name? Avneet, where is your notebook? Computer fair notebook. How many times should I post your name in the defaulter list? आपको नेम देख के भी शर्म नहीं आ रही है? अपना नेम देख के शर्म नहीं आती कि हर बारी मैम मेरा नेम डिफॉल्टर में डाल रहे हैं? Even then you are not sending your notebook for checking. नोटबुक देनी है या नहीं देनी है? कंप्लीट करना है कि नहीं करना काम? You have submitted? So minimum will return the minimum value, right? Today function will return the current date. Whatever the current date will be there, the system date, that will be returned by the today function. Next is the round. When you want to round off a number, after how many decimal points you want to give that number, you can give it using a round. And the syntax for round is equal to round. Note down the syntax of round. Equal to round, जो भी आपने नंबर देना है, कॉमा नंबर डिजिट, कॉमा नंबर डिजिट. क्लियर? नेक्स्ट, name the parts of function. Name the parts of function. So there are three parts of the function. कौन से तीन parts हैं? Equal to, function name, arguments. तभी जब हम ये लिखते हैं, हमने तभी यहाँ पे काटते, कभी यहाँ पे देखो क्यों इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि पार्ट्स ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन, तो फिर आप अकेला सम कैसे लिख सकते हो? So that is why this is wrong. Now the explanation is clear. That's why equal to, for example, आप कोई भी दे दो, max argument. Argument means range of cells. जो भी आपकी range है. Got it? So the parts of functions are equal to sign, function name, arguments. Define functions. Define functions. So functions are the predefined formulas in Excel. Functions are the predefined formulas
in Excel. All right. Functions are the predefined formulas in Excel. Done, बच्चे? Any doubt? Next, the day function is used to display day. Month function is used to display month. Year function is used to display the year. All right. What are the commands for function wizard? What is the command for function wizard? Command for function wizard. क्या कमांड है? हाँ जी. Yes, What is- ma'am, formula tab, function library group, insert function. Library group, insert function. Second. Any other command? Look at your revision notebooks. That was already done in the chapter PT1. Other Then command of home tab, function wizard. editing, home tab, editing group. उसमें फंक्शन विजार्ड होता है? बताओ. हाँ जी, anyone? Okay, where is AutoSum? What is the command of AutoSum? Yes, anyone? So function wizard की one ही command है, that is formulas tab, function library group, insert function button. Okay, insert function button. Next is, this was 11th. Define AutoSum feature. Define AutoSum feature. AutoSum feature contains various mathematical functions to perform different operations directly. Yes, AutoSum features contains various mathematical functions that are used to perform different operations. Now there are two commands for the AutoSum. मैम कहना है हाँ जी बच्चे. मैम home tab, editing group, AutoSum option, and ma'am second command is formula tab, function Formulas tab. library group, AutoSum option. Right. So two commands are home tab, editing group, AutoSum feature or AutoSum button. Second one is using formulas tab, function library group,
Formulas tab. Function library group. AutoSum button. All right. So there are two commands for the AutoSum. Note it down. Home tab, editing group, AutoSum. Formulas tab, function library group, AutoSum. Now is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I raise? Yes, ma'am. Commands मत रेज करना हाँ जी. ऑटोसम की मैम Okay. ऑटोसम फीचर की कमांड्स मत रेज करना Okay, okay, बच्चे I'm waiting. Note कर लो. I'm waiting. I hope side by side you people are learning it. आपको साथ साथ में रिवाइज हो रहा है. Done. यस मैम Name the buttons. हाँ जी. Now tell the name. Yes, ma'am. Ma'am, first is enter button. फर्स्ट इज एंटर बटन Enter button. Second is सेकंड cancel इज button. कैंसिल बटन Cancel button. And third is auto sum. थर्ड AutoSum. इज ऑटोसम Ma'am, fifth is autofill handle. Next is autofill. Next is And ma'am, last is insert function. लास्ट इज फंक्शन विजार्ड insert function button. Clear? यस मैम Pardue raise. Yes, ma'am. यस मैम इधर आपका हो गया. Done. Yours also. Okay, next, write down the functions or formulas for the following. Write the functions or formulas for the following. Write the functions or formulas for the following. Number one, to calculate the sum of values in range
A5 to A15, तो आप क्या लिखोगे? equal to sum मैम इक्वल A5 टू सम colon A5 A15. अब इसमें आपने क्या करना है? यू Colon. नीड टू ऐड द वैल्यू. सम मतलब क्या होता है? एडिशन. यू नीड टू एडिशन ऐड द वैल्यूज. ऐड करने के लिए फंक्शन नेम इज सम. फंक्शन का क्या नेम है? सम. सम रेंज क्या आ रही है? स्टार्टिंग कहां से हो रही है? A5 A5 कॉलन लगाओगे. रेंज Colon. हमेशा कॉलन से देते हैं. रेंज इज ऑलवेज गिवन बाय कोलन कॉलन साइन. Colon. ये कॉलन साइन का सिंबल है. ठीक है. A5 से लेके A15 So this way you are going to write the answer. Clear है? yes Write ma'am the functions of formulas for the following. Calculate the sum of values. Now you want to add a sum. You want to find the sum of the values. The values are A5 to A15. So that's why we are giving A5 colon A15. We want to add, the function name is sum. The function is always starts with equal to sign. equal to sum Right? Clear है? Yes, ma'am. yes ma'am Next is calculate product of A1 to A7. Calculate product equal to product equal bracket to open product bracket A1 open से लेके A1 colon colon A7 bracket close क्लियर है? अवनीत आपको क्लियर yes हो रहा है? ma'am पता चल रहा है आंसर कैसे आ रहा है ये? नेक्स्ट find the largest in the range M1 M10. लार्जेस्ट निकालना है. लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट. हाईएस्ट मतलब yeah max function मैक्सिमम. मैक्सिमम के लिए फंक्शन कौन सा होता है? ma'am max max नॉट मैक्सिमम. पूरा मैक्सिमम नहीं लगाना. द फंक्शन इज मैक्स. MAX. किसमें से निकालना है? M1 से लेके M1 M10 M1 से लेके M10. ओके. नेक्स्ट. excuse me ma'am हाँ जी. मैम जैसे आपने प्रोडक्ट और मैक्स वाले में आपने इनकी स्पेलिंग स्मॉल में लिखे हैं सारे मैम वो कोई नहीं मतलब वो गलत तो नहीं होगा अगर हम इसको You स्मॉल can में लिख write दें in upper case, you can write in lower case, because that is Okay, the ma'am. function name. No case sensitive properties here. Okay, next is find the lowest value in the range A5 to A15. अब Ma'am, आपको min lowest function. वेट lowest निकालना है. Lowest मतलब बताओ अपनी. Lowest मतलब मिनिमम. मिनिमम का फंक्शन क्या होता है? मिनिमम का फंक्शन नेम क्या होता है? min. So we will write equal to min. Okay. Range क्या है? A5 A5 A15 Any doubt? no ma'am Yes. Second done. कर दो रे. ओके, मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ. कैलकुलेट द एवरेज A1 to A7. equal to average एवरेज निकालने के A1 लिए colon फंक्शन क्या होता है? एवरेज. इक्वल टू एवरेज A1 colon A7. A7 Right? So we have completed chapter number 2 today. All the questions and all the topics has been revised in the class. Any doubt in this chapter? Any of the question you are not able to understand?
Yes बच्चे, this chapter is No, clear. ma'am. Yes, ma'am. Now will you able to write the formulas and functions like this? हो जाएगा ये क्वेश्चन. मैक्सिमम बोल रहा है, Yes, ma'am. हाईएस्ट बोल रहा है, तो इक्वल टू मैक्स लगा के रेंज लगा देनी है. ओके, मिनिमम बोल रहा है, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू मिन लगा के लगा देना है रेंज. यू वांट टू ऐड द वैल्यूज, वैल्यूज को ऐड करना है, तो वैल्यूज को ऐड करने के लिए इक्वल टू ऐड के लिए क्या लगाओगे? सम. इक्वल टू सम लगा के कॉलन में वैल्यू. Ma'am, equal to sum. Yes. And if you want to find out the average, to equal to average. If you want to find out the multiplication, तो multiplication के लिए function name is अभी Equal क्या to है? product. मैंने multiply function कब करवाया, पहले ये बताओ आप. अभी की है, अभी रेस किया मैंने यहाँ पे. So when you have to find out the multiplication, we have to use the function name product. Equal to product. And if you want to count the number of entries, for example, I want to count the number of cells in the range A5 to A15. Count the number of cells in the range A5 to A15. तो count करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? Equal to count. Count. Equal to count A5 colon A15. Okay, clear? Yes, ma'am. And if you want to return the system date, how will you show the system date? What you will write? Ma'am, using today function. Equal to today. By using this function, you can display the current system date. All right. The concept ma'am. is clear. Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, so all the best for the today's revision test. Be at time exactly at 4 p.m. I'm going to upload the test. So be ready with your answer sheets and do not send me handwriting like you are writing without leaving any line. Always leave one line after the one answer, right? And details is to be mentioned on the test paper. जिसका unnamed paper होगा, I'm not going to check it. And after 4:50, 4 से 4:40 you are going to do the test. 4:50, right? तब तक आपकी PDF बन के मेरे पास आ जानी चाहिए. After that, the late submissions are not going to be entertained. Yes. Maximum का maximum. Subjective होगा. Addition के लिए sum. Test. Average के लिए average. Multiply करना है तो product. Count करना है तो count. And अगर आपको current system date देनी है तो today function.